Dear students and parents, a very blessed and wonderful morning to you all. Here myself, Happy Upadhyay, your English teacher, welcomes you all in online classes. English is fun. I hope you all are connected with the studies through our little efforts. So, today again, we will learn and enjoy together with lots of new things. Dear parents and students, if I tell you honestly, I am really very thankful to you all. Because this online class was never possible without your cooperation. This has reminded me once again that alone we can do so little, together we can do so much. Written by Helen Keller. Students, in previous video, we have started our new chapter named Adjectives. And today, we will move further with adjectives, the word that describes a noun. Today in this module, we will also sing a song which is related to adjectives. So let's sing and learn about adjectives. I said red, yellow, green and blue. Red, yellow, green and blue. Orange, red, green and blue. Pink, purple, green and blue. Red, yellow, green and blue. Orange, pink, purple, brown. La 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 la. La 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 la. These are adjectives. These are adjectives. These are adjectives. I said fat, thin, light and dark. Dirty, clean, curly and straight. Long, short, soft and hard. Hot, cold, soft and hard. Fat, thin, light and dark. Dirty, clean, curly, straight. La 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 la. La 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 la. These are adjectives. These are adjectives. These are adjectives. I said big, small, tall and short. I said slow, fast, happy and sad. I said heavy, light, old and new. Wet, dry, old and new. Wet, dry, heavy, light. I said heavy, light, old and new. Wet, dry, old and new. Wet, dry, heavy, light. La 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 la. La 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 la. These are adjectives. These are adjectives. These are adjectives. So students, did you enjoy this poem? Yes ma'am. It was so lovely and a sweet poem. So, now it's time to check your knowledge, that what you have learned through MCQs. Our first question is, these are dash pencils. These are 3 pencils or 6 pencils? The correct answer is 6 pencils. The next question is, Rohan is a dash boy. Rohan is a happy boy or Rohan is a sad boy? The correct answer is Rohan is a happy boy. Now our next question is, the day is so hot or careless? The correct answer is hot. Now our next question is, the apple is dash. The apple is salty or the apple is sweet? The correct answer is the apple is sweet. Now students, after checking your knowledge, it's time to attempt some questions given from the content. So let's move to practice time.
So students, what you have to do here is take the correct adjectives. अब इसमें आपको क्या करना है, nouns के अकॉर्डिंग करेक्ट एडजेक्टिव्स पे टिक करना है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट स्नो, रेड स्नो. अब स्नो व्हाइट होता है या रेड, तो ऑलरेडी यहाँ पे व्हाइट पे टिक मार्क है. तो सिमिलरली आपको बाकी के साथ भी वही करना है. सेकंड में आपको ये बताना है कि फ्रूट फास्ट होता है या राइप होता है. राइप मीन्स पका हुआ. थर्ड इज फ्लैट ग्रिटी होता है या सैड. फोर्थ इज टेडी डीप होता है या फिर सॉफ्ट. फिफ्थ इज स्काई ग्रीन होता है या फिर ब्लू. सिक्स्थ वन इज टेबल बिग होता है या फिर स्लो. सेवंथ इज क्लाउड्स डार्क होते हैं या फिर ग्रीन. एट्थ वन इज किटन क्यूट होती है या फिर ब्लू. सो स्टूडेंट्स, आपको सोच समझ के करेक्ट एडजेक्टिव्स पे टिक करना है. एंड द नेक्स्ट वन इज विच एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द वर्ड इन कैपिटल. कलर द बॉक्स. सो स्टूडेंट्स, आपको नीचे कैपिटल लेटर्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एंड इनके सामने आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं जो कि इस नेमिंग वर्ड को पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्री फनी तो होता नहीं और ना ही वो ब्रेव होता है, इसलिए यहाँ पर टॉल पे कलर्ड है. तो सिमिलरली आपको ये बताना है कि रॉक कैसा होता है. रॉक मीन्स पत्थर. कैसा होता है, हैवी, हैप्पी या फिर सैड. थर्ड वन इज फेदर. फेदर मीन्स पंख. अब पंख कैसा होता है, हॉट, सॉफ्ट या फिर डीप. फोर्थ इज सोल्जर. अब सोल्जर कैसे होते हैं, रेड, ब्रेव या फिर लॉन्ग. फिफ्थ इज क्रो. अब क्रो कैसा होता है, ग्रीन, ब्लैक या फिर हॉट. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आफ्टर द एक्सप्लेनेशन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. There are many more things we will know about adjectives in our next video. So till then, keep learning, keep growing, wear mask, follow hygiene, maintain social distancing. Thanks for watching. See you in next video. Bye bye.